SI unit of, okay, the SI unit of universal gas constant R is how much? Okay, the SI unit of universal gas constant R is how much? So watt, Kelvin inverse, mole inverse. Option B, Newton, Kelvin inverse, mole inverse. Option C, Joule, Kelvin inverse, mole inverse. Option D, Org, Kelvin inverse, mole inverse. Okay. So we know that so PV ideal gas equation, PV is equal to nRT. Okay. So PV is equal to nRT. Okay. This one the ideal gas equation. Ideal gas equation. Ideal gas equation. Okay. So your ideal gas equation PV is equal to nRT. We have to find the value of R. R means gas constant. Here P equal to means what? P means pressure. P means pressure. Pressure is equal to force by area. Okay. Force by area. And this one is the force. F means what? F means force and A means what? Area. Okay. And V means what? V means volume. Okay. V means volume. N is number of mole. N means number of mole. Number of. Okay. R means gas constant. Universal gas constant. Okay. R means universal gas constant. T means absolute temperature. Okay. T means absolute temperature. Now we have to find the universal gas constant. Okay. So that means dimension of P of dimension of V. Okay. Is equal to dimension of N, dimension of R, dimension of T. So we have to find dimension of R. So dimension of R is equal to dimension of P, dimension of V divided by dimension of N to dimension of T. Okay, dimension of T. So here pressure, P for pressure, pressure is also dimension for force per area. Okay, and P also written as F by A, dimension of F by A of dimension of V divided by dimension of N, dimension of T. Okay. So the gas constant, dimension of gas constant is nothing but F by A. This one the force. Dimension of force is M1 L1 T to the power minus 2 divided by A means area, that is L square. Okay. And so V means volume. Dimension of volume is LQ divided by. So N is dimensional is mole, MOL, and T the dimension T is Kelvin. Okay. And this one is nothing but M1 L1 plus 3, that is 4, L4 T to the power minus 2 divided L to the power 2 divided by mole Kelvin. Okay. Now R, dimension of R is equal to M1 L to the power, here 4 and this one the 2, L to the power 2 T to the power minus 2 divided by mole into Kelvin, dimension of Kelvin. Okay. But in case of question here, that answer is watt, joule, Newton and arc. Okay. And this one is also written as. So M1, okay, L1 T to the power minus 2, okay, into L1. Okay. Here 1, 1, 2, that is L square divided by mole Kelvin. Okay.
But in case of this one, m1 l1 t to the power minus 2, this one is the force. So is equal to this one is the force. Okay, dimension of force into this one is displaced distance or displacement. Suppose displacement divided by mole mol dimension of k. Kel means Kelvin. Okay, and force into displacement nothing but work. Okay, so this one the work. Okay, force into displacement nothing but work. Worked by mole into Kelvin. So SI unit of work. SI unit of work is joule. Joule divided by mole into Kelvin. Okay. So dimension SI unit. So SI unit of R. Okay, is joule mole inverse Kelvin inverse. Okay. So your correct answer is option C is correct. Your correct answer is option C. Okay. So देखो क्वेश्चन कौन देछि ना एसआई यूनिट ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट वैल्यू पचारछि नहीं तो एसआई यूनिट पचारछि पण एसआई यूनिट बाहर करिया पई हेले हमें फास्ट कौन बाहर करियो ना एठी भी हे जिवो देखो हमें एते जो मु लेंदी स्टेप करी ना लेंदी न करबी आराम से ए केस रे भी हे जिवो इजीली हम सॉल्व करि परिबा वाट केल्विन मोल इनवर्स न्यू आउ दे न्यूटन केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स और केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स देखो P मींस होची कोन P v इक्वल आइडियल गैस इक्वेशन हमर कोन P v इक्वल nRT P इज इक्वल टू कोन है जो P होची प्रेशर प्रेशर होची फोर्स बाय एरिया V होची वॉल्यूम और N होची कोन नंबर ऑफ मोल R होची यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट T होची एब्सोल्यूट टेंपरेचर देखो मु एमते डायमेंशन आकार देखो P dimension of P dimension of V dimension of N dimension R dimension T तो एमिति सॉल्व करियो अपेक्षा देखो मु जेमिति सॉल्व करछि ना याको एमिति न सॉल्व करी यार शॉर्टकट मेथड पे हम सॉल्व करि पारे और एमि केमिति सॉल्व करि पारे देखो PV nRT लिखिले हला PV कोन nRT लिखिले तणु मु कोन लिखि पारि ना R केते जे PV NT NT लिखि पारि तणु PV होची कोन वर्क नहीं PV माने वर्क हे जियो तणु एटा हम वर्क हे लिखि पारियो PV होची वर्क वर्क बाय NT हे जियो एमिति हम बाहर करि पारिबो हला ए जो PV इज PV P और V होची W माने होची वर्क ओके W माने होची कोन वर्क होची तणु वर्क रे डायरेक्ट हम यूनिट पुट करबे एते स्टेप मु जते लिखि स्टेप सॉल्व करिया किछि पडिबो हम ए सिंगल स्टेप रे भी हम सॉल्व करि पारिबे ओके त एटा कोन यूनिट कोन हे जिवो हम जूल यूनिट W होची वर्क होची एनर्जी डायमेंशन समान है वर्क होची कोन जूल हो जूल बाय N होची मोल और T होची कोन केल्विन के तणु आर केते जिवो आर यूनिट होची जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स हेले एमिति हम सहज रे भी बाहर करि परिया एते स्टेप किछि करिवार आवश्यकता नाही बुझिले देखो एमिति भी हम बाहर करि परिबा मु जेमिति जो बाहर करछि देखो डायमेंशन रो ए जो फार्मूला हम ए फार्मूला रे भी हम बाहर करि परिबा अदरवाइज शॉर्टकट रे भी हम बाहर करि परिबा ओके गोटे स्टेप रे भी हम बाहर करि हबो ताको लेंदी भी करि हबो गोटे स्टेप आउ गोटे मेथड भी सॉल्व करि हबो ओके थैंक यू फॉर योर वाचिंग प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब थैंक यू